Hello everyone, welcome to our channel Science XYZ. This is अर्चना यादव. आज हम क्लास 7 के लेसन नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. तो एसिड और बेस में हमें डिफरेंस स्टेट करने हैं. द एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड while base turn red litmus paper to blue. Acid are sour in taste while base are bitter in taste. Acid do not change the color of turmeric indicator while base change the color of turmeric indicator. Acid are not soapy in touch while base are soapy in touch. Next question है ammonia is found in many household products such as window cleaner. It's turned red litmus blue. What is the nature? तो इसका नेचर होता है बेसिक. Name the source of which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन होता है और इसका क्या यूज़ होता है? तो लिटमस सॉल्यूशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से. लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. लिटमस को हम एज ए इंडिकेटर यूज लेते हैं जिससे एसिडिक और बेसिक नेचर पता चलता है किसी भी सॉल्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल. हाउ वुड यू वेरीफाई इट? डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है? तो डिस्टिल्ड वाटर होता है न्यूट्रल इन नेचर एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. इन आइदर ऑफ केसेस कलर रिमेन अनचेंज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हमें न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल की हेल्प से. तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस. हेयर बोथ एसिड एंड बेस गेट न्यूट्रलाइज्ड. For example, sodium hydroxide is added to hydrochloride acid, sodium chloride and water are obtained. I hope you understand very well. Next question है तो हमें ट्रू और फॉल्स स्टेट करने हैं. नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. फॉल्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. इट्स फॉल्स. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. It's true. Indicator is a substance which show different color in acidic or basic solution. It's also true. Tooth decay is caused by the presence of a base. तो टूथ डिके होता है एसिड की प्रेजेंस से, ना कि बेस की प्रेजेंस से. तो डोरोजी हैज़ अ फ्यू बोटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. ही हैज़ टू सर्व ड्रिंक on demand of customers. One customer want acidic drink, another want basic and third one want neutral drink. How will Daroji decide which drink is to be served whom? कौन सी ड्रिंक किसको सर्व करे? दारोजी कैन टेस्ट फ्यू ड्रॉप सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स. कुछ बूंदे टेस्ट कर ले. एसिडिक सॉल्यूशन इज सोर इन टेस्ट, बेसिक सॉल्यूशन इज बिटर इन टेस्ट एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज नो टेस्ट. अलोंग द टेस्टिंग दारोजी कैन litmus paper to test the natural soft drink and he should use blue litmus paper to test the acidic solution. Daroji has put the drop of solution on blue litmus paper. It turns red. Means the solution is acidic. Next one is an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. The antacid tablet contains base like milk of magnesia or magnesium hydroxide which neutralize the acid produced in stomach. Hence it is used while suffering from acidity. Are you understand? The next one is calamine solution is applied on skin when an ant bite. तो ant bite में होता है formic acid. When ant bites it inject formic acid inside the skin. Calamine consists the zinc carbonate which is basic in nature. Hence the calamine neutralize the effect of formic acid to bring relief the affected person.
Next one is factory wastage is neutralized before disposing it into the water bodies. Factory wastes are acidic in nature, which may cause harm to aquatic life. Hence, they are neutralized by using the base before disposing it into the water bodies. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.